सो एक सीन है जिसमें कोई लाइट्स कुछ भी नहीं है। ये बेसिक है, ये थोड़े लोग आप करते होंगे शायद, लेकिन इफ आई गो राइट, if I just literally go to one particular marketplace, we can marketplace. Not there. Just add this. So what's the project? Lighting basics, right? Lighting basics. Okay. The project. Here I got my project. Okay. So I'm just opening maps and see one particular location. आप फोन बाजू लगा दो, मेरे हाथ में दे दो, नहीं तो हाँ, ठीक है. See, one particular scene is there which is properly lit and everything, right? Now what I'm just doing here, I'm just deleting, okay, all the lights, atmosphere, fog, कुछ भी नहीं है. Okay, for example, ठीक है. One second. Okay, what I'm doing, I'm just deleting all the lights. That's it. कि जितने भी लाइट्स है पूरा मैंने निकाल दिया, राइट? सो नॉट इवन ए सिंगल लाइट इज देयर. जब भी आप सीन लेते हो अनरियल में,
डायरेक्ट यू कैन गो हियर एंड एनवायरमेंट लाइट मिक्सर बोल के ओपन कर सकते हो. Blindly just click on these all 5. 1, 2, 3, 4, 5. देखो बेसिकली आपका सीन पूरा लिट हो गया है. Okay, if you remove this fog here, okay, it will be looking more brighter. Fog है इसीलिए थोड़ा कम, right? But if you add that fog also, yes, fog it is there. Now this direction light, if you select Control L, and you can rotate it. See, you can make it more dramatic and everything. See what I did? Simply went and click on environment, okay, light mixer, that's it. और कुछ भी नहीं. Here, if you go here in this, see right now the scene is looking like this. सब डिलीट कर दिया, खाली उसको enable कर दिया तो I got complete light system. So basic lighting हो जाएगी. ये किससे हो रहा है? This is all happening because of what? Because of lumen. Because of lumen. Okay, जो कि आपका सॉफ्टवेयर में अनरियल में राइट नाउ लूमेन हैज केम. लूमेन आने के बाद ये मॉडिफिकेशन आया. इससे पहले हमको सब के सब मैन्युअली क्रिएट करना पड़ता था. एंड इवन यू नो वन थिंग, रिफ्लेक्शन जो आना है पानी में जो भी है उसके लिए भी हमको रिफ्लेक्शन का स्पीयर लेना पड़ता है. इफ यू होल्ड, आई विल ओपन वन ओल्ड सेट राइट नाउ. I can show you like in that reflection के spears. You will have reflection के spears रहते थे. When I take that spear, reflection वो area में होता था. अगर मैं planar reflection लिया तो पानी के लिए, glass floor के लिए मेरा होता था. So it is something like including reflection, mirror and everything. We used to add everything into the scene. Right now, Lumen has done a lot of the job. Understood? Now this is happening because of the Lumen. Okay. Understood this one? Got it? इसमें कोई डाउट किसी को भी? Now I can, ये fog एक में डिलीट करके देख रहे हैं तो you can see it more properly. See right now, if I go with, see, proper evening lighting and everything. See, so nice. And you will get render also in the same quality. इसमें अगर आप जाके पाथ रेसर अगर आप क्लिक कर दिए, ओके, फॉर एग्जांपल, what will happen first of all? कितना टाइम ले रहा है देखो. Now lighting is more beautiful. Is it possible to increase the exposure with this light? हाँ. Without changing the direction, without changing the direction. No. You can't. See, it is still rendering. Only one frame. वो देख सकते हैं सैंपल जब इसमें काउंट कर जाएंगे. हाँ. हम वो एडजस्ट नहीं कर सकते. इसके लिए नहीं है, पाथ रेसर के लिए नहीं, आप खाली उसके लिए कर सकते हो, लूमेन के लिए. इसमें ऑलरेडी भयंकर सैंपल्स पूरा अटैच्ड है. लाइव होता है. हाँ, ये भी लाइव रेंडरिंग है. सर ये तो अभी आप हल्का से छोड़ दो फिर करेंगे. हाँ, दैट इज व्हाट लाइव रेंडरिंग होता है, बट इट्स टेकिंग टाइम. अगर आप समझो अल्टीमेट ग्राफिक कार्ड लेके आ गए विच इज रियली ब्यूटीफुल, 4090 समथिंग लाइक दैट, द सेम वर्क इट विल बी मोर फास्टर. It is something like live rendering. Path Racer also, it is live rendering only. लेकिन it is taking lot of time. अभी इतना जो क्वालिटी है एक इमेज के लिए ठीक है मेरे, but not for a movie. 1.5 movie के लिए if you keep it in Path Racer, it will take 1.5 day दे दो. It will render in 1.5 day. But see the quality.
सर उनके पास तो बड़े बड़े रेंडर इंजन होते हैं। किसके पास? मूवी वालों के पास। हाँ होते हैं, हाँ, लेकिन फिर भी कॉस्टिंग इज कॉस्टिंग। अगर आप मुझे एक मूवी पूछ रहे हो, ठीक है, मैं पाथरेसर लगा रहा हूँ, लूमेन लगा रहा हूँ, लूमेन का मेरा अगर 10 दिन में हो गया तो आपका 10 दिन का चार्ज देता हूँ। अगर आपको पाथरेसर चाहिए वो तो 1 महीना लगेगा। अगर ये 10 दिन में हो गया तो पाथरेसर में लगाए तो वही सिस्टम में 1 महीना लगेगा। 20 दिन का चार्ज आपको तो डालना ही डालना है, राइट, वेदर यू नीड दैट मच क्वालिटी और नॉट। सिनेमैटिक के लिए यस, लाइटिंग एडजस्ट करके लूमेन में मुझे क्वालिटी आ जा रहा है। इसमें यू हैव सम प्रॉब्लम्स आल्सो टिल नाउ व्हिच इज नॉट बीन सॉल्व। वही अभी भी इंडस्ट्री मेगा लाइट्स ऐसे पूरे लेके आ रहा है, बिकॉज इन दिस लूमेन one main problem when you go to the interiors, there is a problem of light leaking. लाइट लीकिंग बोले तो पता है क्या, कभी सुना है? हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड लाइट लीकिंग? हाँ, वो क्यों होता है? ओके, यू नो व्हाट इज लाइट लीकिंग? जो सरफेस से, जो उधर से मुझे लाइटिंग बाहर आना है लेकिन उधर से लाइट आ रहा है, लेकिन वो क्यों हो रहा है? व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज आई हैव ए सिंगल प्लेन देयर। मेरा नॉर्मल उधर, ओके, ओनली दिस साइड है, आई डोंट हैव द बॉक्स देयर, आई हैव ए प्लेन देयर। सो ये प्लेन में जब वो पाथ रेसर में कैलकुलेट कर रहा है, वो लाइट को लेके आ जा रहा है वो कॉर्नर्स पे, स्पेशली इन द इंटीरियर्स। इट विल नॉट हैपन विथ एवरी प्लेस, बट सम प्रॉब्लम में वो एरिया से लीक हो रहा है। अंडरस्टूड? हाँ, एजेस बढ़ाए तो क्या हो जाता है? आई नो दिस आंसर। एजेस बढ़ाए तो क्या हो जाता है? अपना फाइल हेवी हो गया, फिर क्या फायदा? तो सब डिवाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए अभी भी लोग, ओके, एक अच्छा खासा सिनेमैटिक के लिए मैक्सिमम दे आर यूजिंग लूमेन ओनली। लूमेन इज इनफ। अगर पाथरे सब करना है, अभी देखो सिनेमैटिक में इतना टाइम लिया, जस्ट इफ आई मूव, थोड़ा कैमरा एडजस्ट करना है, करा, फिर हो गया खत्म, फिर से वही टाइम लेगा। सो देयर इज नो पॉइंट, राइट, दिस मच ऑफ। सर आपने बताया जैसे कि जैसा भी क्वालिटी दिख रही है कैमरा में भी सेम ही रेंडर में सेम ही दिख रही है, ये तो आ जाएगा। नहीं जनरली अगर कैमरा लगा रहे हो उसमें आपको एनिमेट करके कैमरा को, तो मेरे केस में क्या होता है जब मैं कुछ कर रहा हूँ तो कैमरा लगाते ही उसकी सनलाइट ही दिख रही है, जैसे मान लो मेरा वाला सीन वो भी दिख रहा है मुझे अच्छे से, बट कैमरा व्यू में जाते ही वो अलग से डल दिख रहा है, वापस से कंट्रोल करके राइट क्लिक करना पड़ता है ऐसा भी। That I don't know, that I never experienced. सर वो कह रहे व्यू कोड से कैमरा व्यू अलग दिखता है, ऑलमोस्ट मतलब हर बार ही दिखता है। तो कैमरा, okay, there might be a one chance. See, camera also you have exposure settings. Okay, scene also you have the exposure settings. So शायद आपका जो कैमरा है उसमें exposure settings अलग है. In that camera also you can adjust the manual exposure settings. लाइट में भी कर सकते हो आप, कैमरा में भी कर सकते हो। कैमरा लगाने से पहले वीडियो कॉल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, दैट यू कैन। ठीक है, इधर तक आपको क्लैरिटी हुआ? डन, लूमेन और इसका। ओके, नाउ आई विल गो विथ वन मोर सीन जो कि मुझे इंटीरियर्स बनाना है। ठीक है, आई विल टेक वन मोर सीन, आई विल गो टू मार्केट प्लेस। ओके, इन दिस I'll add this project to our scene. 2 मिनट टाइम लेता है बट वो भी है वेरी गुड। So I'm going with this broadcast. ठीक है, maps, okay, this one is something like इंटीरियर के लिए। ओके, इसमें ऑलरेडी लाइट सेटअप है, ये पूरा लाइट्स मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, एंड आई विल एक्सप्लेन यू so that you can understand, okay, interior lighting. Now I'll select this. Okay,
So okay, when I have selected one, see, I can see like it is selecting multiple 4 sets. तो क्योंकि ये ग्रुप में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिफ्ट जी मारते हैं. ओके, शिफ्ट जी मार लेके you select one, just delete it. Okay, when you are selecting this, press shift G and delete the lights. So इसमें देखो ऑलरेडी इधर मैंने लाइट डिलीट कर दिया लेकिन लाइट इधर फिर भी है. Why? That is what I have shown you. लाइट क्या कर रहा है उधर, बेक हो गया ऑलरेडी. सो मैं पूरा मैं आपको करके दिखाता हूं, सो यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. देखो मैं पूरा लाइट्स डिलीट कर दिया. हाँ ना, सब डिलीट हो गया ना, ये सीन में हो गया. जस्ट 2 मिनट्स है, डिलीट हो गया. This is direction light. Okay. See, right now I've deleted maximum all the lights. Okay. Now in this, if I go to force, okay, no pre-computed lights. The moment when I say like this, okay, now go to and here just build light only. See what it has done? It has rebuilt the thing and it has deleted all the lights which all got baked. Okay. Now whatever the light which you can see, that is because of the emissive. Emissive सबको पता है? emissive सबको पता है? फिर से बताना क्या एक बार? हाँ, बताना. पता है ना सबको? You have idea? No, if you don't have, it's a minute job. Okay. For example, I have just taken one sphere here. Okay. If I go to material, n underscore, okay, emissive, मैंने इसको इधर just I've taken one value.
Okay, and a color, whatever the color which I want. Okay, in this, if I go for yellow, this I can put it into emissive. I will make it as a p value. Okay, otherwise, what we will do is we will take a multiplane over here. Connect this. We will connect this. Okay. Now I got the glow head, right? Now if this one, okay, for this, if I apply, see what happened? It got the glow here. See the moment when I'm taking this to wall, see it is lighting up that particular area, right? See it is giving a light. Now if I go and increase this one to 10. So there you go. It is glowing up more. It will act like a light. Okay. लेकिन what is the negative for this? ये भी लाइट लगा सकते हैं ना, ये तो लाइट का लोड भी लेता भी नहीं है. Then what happened? What is the problem with this? You know, now the moment when it is in the scene, okay. Now if I go back, मेरा light कम हो जाता है. See, if I am going back, so that light got reduced. The moment when I am nearer, the light got increased. जब हम लोग दूसरा लाइट लगाते हैं, जनरल लाइट लगाते हैं, it will not happen like that. So this what happens, अगर आप सीन में ज्यादा एमिसिव लगा दिए, जब आपका कैरेक्टर भाग रहा है, तो दूर से क्या होता है, when it is going away from the character, वो लाइट डिम हो जाता है and it will look like a flickering. So this is something like at some areas you can use this emissive as your light, okay, but not in the continuous. So what happens, it will have that flickerness. अगर मैं इसको see right now, if I make it here, ये अच्छा मुझे वॉल के ऊपर भी दिखा रहा है, राइट? वॉल के ऊपर मेरा लाइट दिखा रहा है, फॉर एग्जाम्पल हियर. ओके, नाउ इफ आई गो अवे, I've deleted the fog. See right now the brightness, it is there. Now the moment when I'm going away, see वो जो it means it was on the wall also, right? लेकिन अभी देखो दूर जैसे जा रहा हूँ, wall के ऊपर भी I'm losing the light. The moment when I'm nearer, there is a light on the wall. So this kind of effect, it will be problematic with the emissive. That is the reason why we will not keep emissive much of the places. खाली एक जगह पे अगर हमको एक लाइन छोटा सा स्ट्रिप जा रहा है, वैसे कुछ लगाए तो हम लोग एमिसिव लगा सकते हैं. What I've done? हाँ? होता बोले तो it is something like what we can say, emissive is not a light. That is the main reason. उसके अंदर से लाइट नहीं आ रहा है. लाइट इज समथिंग लाइक विच हैज इट प्रॉपर्टीज लाइक आप कितना भी दूर जाओ उसका इफेक्ट कम नहीं होता है. ये क्या है, टेम्पररी उधर एक ग्लो दे रहे हैं हम लोग. सो ग्लो कैसे होता है, व्हेन यू आर गोइंग अवे, ओके, कैमरा से, दिस इज समथिंग लाइक ऑप्टिमाइजेशन. वो ऑप्टिमाइज हो जाता है, ग्लो काम नहीं करता हूँ. जब मैं नियरर हूं तो मुझे मेरा सीन को ऑप्टिमाइज करना है, तो मैं इधर एक एमिसिव लगा सकता हूँ, लेकिन मैं इसी रूम में रहना चाहिए मैं, तो तब तक वो बराबर दिखेगा. But the moment when I'm going away, so game engine knows that emissive is for a temporary basis. तो उसको क्या करता है, उसका ग्लो जो है वो कम कर देता है. That you can't control. Emissive का मीनिंग ही वो है. So when something it is there in your room, आप वो रूम तक हो, then you can do that. But when you are going away from that, then that will create the problem. तो ब्लेंडर में भी ये सेम तरीके से वर्क करता है तो डिफरेंट? हाँ, ब्लेंडर अलग, ब्लेंडर अलग है, ब्लेंडर अलग है, ये वाला अलग है. Never compare your game engine and your softwares are different, completely different. Okay, done. Now
I'll fix a camera. Okay. After 12, 30. अब हाँ नहीं बाद में 12:30 यही पर ही हाँ इधर ही. Okay. Now I'm taking a camera. Okay. I've taken a camera and I want to fix this view. I want to fix this view. What can I do? Now here is my camera and this is my view. For my camera, I want to fix this view. How can I do that? Huh? Right click करके snap object to view. आपका कैमरा इधर आ गया. Now it is a camera view. ये मैं बोला था ऑलरेडी. सर एक डाउट. हाँ. सर अगर यहाँ पे ना कैमरे का वो बना हुआ है ये वाला. प्लेस होल्डर. हाँ. यस सर. हाँ. अगर मुझे इसी पे ही स्नैप करना है एग्जैक्ट लोकेशन पे. हाँ. कुछ भी नहीं. इधर राइट क्लिक करो, प्लेस एक्टर ले लो, कैमरा ले लो, आ गया उधर ही. ऐसे कुछ. हाँ. उसी के ऊपर प्लेस करना है. नियर बाई थोड़ा इधर उधर आता है. इट इज नॉट एग्जैक्टली 100% नहीं आएगा, थोड़ा इधर उधर आएगा. Then you can take. For example, the same technique I'm going to use right now for the light. अगर मैं, for example, if I take a light, okay, if I want to keep a spotlight here, तो इधर लेके if I want to make it work on this properly, so it will be very tough for me, right? So what I'll do, I'll select this and I'll right click, okay, place an actor, spotlight. अभी देखो एग्जैक्ट वही स्पॉट पे आ गया. ये तो शायद सेंटर में आते हैं ना यहाँ पे पिवट पॉइंट है उसका. हाँ उधर नहीं, थोड़ा इस तरफ उधर आता है, but it will come maximum. So it will be something like your work at least 80% is done. Your work 80% is done. Right now, what is the camera? Here is the camera. Now you zoom it back. Okay. Understood? Right. Pivot point चेंज कैसे करते हैं किसी चीज को? हाँ? Pivot point चेंज कैसे करते हैं? Pivot point. Yes. चेंज कर सकते हो, लेकिन वो उधर ही फिक्स नहीं होता. नहीं सर उसके सेंटर में चाहिए. मान लो कहीं जैसे अगर एक किनारे पे चाहिए. हाँ. कॉर्नर में आता है. हाँ. डिफॉल्ट पे. हाँ. अगर टेम्पररी कैसे चेंज करते हो आप? If you want to change the temporary, how you will change? कभी किया नहीं. क्या पिवट पॉइंट चेंज कोई भी नहीं करा? मॉडलिंग में जाके टेक्स्ट फॉर्म में एडिट पिवट है उसको. हाँ. पिवट पॉइंट. ओके वो एक है. एंड अभी सी में मुझे अभी दूसरी जगह पे से वो करना है. कैसे करूं? हाँ. राइट नाउ सीन में अगर मेरा ये वाला है, ओके, इफ आई वांट टू मूव दिस, इसका पिवट पॉइंट अगर मुझे इधर से नहीं इधर से आना है मुझे, तो कैसे करोगे? कोई भी अब तक नहीं करा. वो स्नैप में पड़ती है. स्नैप में वो तो फिर ऐसे ही कर सकते हैं. हाँ. कंट्रोल प्रेस करके आप ऑल्ट कंट्रोल कर सकते हैं. क्यों अब तक क्यों नहीं करे? इट मीन्स if you press, it means you are not moving this all at all. It means one second, this particular pivot point is here, and what you want this pivot point till here. Yes. I should just say one second. Object one second.
अरे बहुत ही बेसिक है सर कोई चीज नहीं 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 ये मूव होता है लेकिन परमानेंट नहीं होता है इसीलिए हाँ सी राइट नाउ ऑल्ट एंड मिडिल माउस बस नहीं सी राइट नाउ ये मूव कर दिया मैंने लेकिन प्रॉब्लम क्या है once if you release it again it will go back once you release it what happened it will go back that is the only for example alt middle mouse and you move it तो प्लीज के फाइल के रिलीज करोगे मैं चले जाएगा हाँ और रिलीज कर दोगे मैं चले जाएगा अपनी डिफॉल्ट लोकेशन पे अभी इधर से रोटेशन होगा हाँ सर लेकिन अगर आप छोड़ दोगे फिर से वो उधर चले जाएगा होल्ड होल्ड करके रखना कौन फॉर एग्जाम्पल एक मिनट मैं स्नैप निकाल के दिखा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल अभी है ठीक है राइट नाउ हियर नाउ alt hold middle mouse and you moved it तो सर तो ठीक है हाँ तो काफी रन होता है बिना काम करे ये चला जाएगा पिवट के पॉइंट क्यों मूव करना बोलो एक बार रोटेशन के लिए ठीक है स्नैप के लिए कहीं एग्जैक्टली वहीं से रोटेट हुए हम्म चीजों को एनिमेशन पर्पस के लिए हाँ दिस इज द आंसर व्हाट के लिए एनिमेशन एनिमेशन के लिए आपका पिवट पॉइंट उधर ही रहना पड़ेगा देन ओनली यू कैन गिव द की टू इट when it is changing it you can't give a key that is the reason why this is not that much useful इसीलिए मैंने इसके लिए आपको एक टेक्निक बताया था हाँ एक्टर क्या करना पड़ेगा मुझे एक एक्टर लेके एक्टर को इसको चिल्ड बना दो एक्टर किधर भी लगा दो उसके हिसाब से रोटेट हो जाएगा दिस इज टेम्पररी ये वाला जो है इसीलिए हम लोग इसको ज्यादा यूज ही नहीं करते यू विल नेवर यूज इट इसको यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे इसको चाइल्ड बना दो एक एक्टर ले लो इसको चाइल्ड बना दो बस एक्टर को कितना दूर लगाना है उतना दूर लगा लो उसके हिसाब से मूव हो जाएगा एक्टर को आप की कर सकते हो सब कुछ कर सकते हो That's it. पिवट साइड कर दिया उसको आपको ऑब्जेक्ट के सेंटर पे लाना तो डायरेक्ट कैसे आएगा सेंटर क्या जैसे आपने पिवट इसका भी मूव कर दिया ऑल्टर मिडल ऑटोमेटिक हो जाता है वो आपको डिफॉल्ट करने की जरूरत नहीं है फॉर एग्जाम्पल मैंने आल्ट पकड़ा इसको मूव कर दिया बाद में इधर क्लिक करा फिर इसको क्लिक करा चले गए आप करने की जरूरत नहीं ठीक है राइट ओके नाउ दिस वन इट इज देयर आई एम कीपिंग इट लाइक दिस ओके now what I'll do I'll just duplicate this then keep it here manually इसको ऐसे थोड़ा बहुत रोटेट कर लेके minus 90 no okay only 90 yes okay तो लाइट ना स्टेशनरी पे हाँ stationary move पे बना दे you have to select that and make it as a move so the moment when it is movable it is dynamic now if you press G and check so your light you can see it properly लेकिन आपका लाइट ऊपर और नीचे आ रहा है लेकिन इधर नहीं गिर रहा है बिकॉज हमने तो पूरा उसका बेकिंग किल कर दिया तो कैसे आना अभी फॉर एग्जाम्पल इफ आई मेक इट दिस वन ओके इसको बाहर लेके आ रहा तो मीनिंग नहीं बन रहा है तो मैं क्या करता हूँ अभी इधर आई जस्ट सेलेक्ट दिस एंड आई क्रिएट वन मोर पॉइंट लाइट
ठीक है, I'll create one point right here. थोड़ा बहुत मेरा वॉल के ऊपर आ जाना होगा, ठीक है. Now I'll just decrease the intensity of that. So now if I press G, okay, बाहर आ जाएगा. Select all the lights. Just take it to it will be off all production. Understood? Now if I press G, now in this if I go and select the okay point light का जो भी है, just make it as 1 so that it will be less. Okay. If you are moving it here, what happens? You are not getting this yellow flavor, whatever you want, right? So now move it in, right? Okay. अभी और एक लाइट लेता हूं मैं. For example, this one it is there. This is something like what you have in this. Sir, in the previous slide, how do you get the lens flare? बोलता हूं. I have that. Last में बताता हूं. ठीक है? Lens flare we have it. Now this particular thing, whatever here it is there, what is that? It is an emissive. ये light glow कैसे आ रहा है? When you go it here, in this, when you go, there is in one particular map, they have given the emissive for this. Okay, इसीलिए मुझे वो लाइट का ग्लो उधर से आ रहा है. एग्जैक्टली वो पूरा एक ही मटेरियल में, कंप्लीट ऑन वन पर्टिकुलर मटेरियल, एमिसिव एक जगह पे दिया है, राइट. सो नाउ ये पर्टिकुलर फ्रेम पे मेरा एमिसिव आ जा रहा है. ये इससे हमको फायदा क्या है? मैं अभी तो बोला कि एमिसिव ज्यादा यूज नहीं करना, फिर एमिसिव लगा दे इधर. So what I have to do means at this particular point, hold this and take one spotlight. What you do? Take one spotlight. Now you just move it here. मैं बोला ना 100% accurate नहीं आएगा, लेकिन उसका नजदीक में आ जाएगा. Right? Now you rotate this one as you want. Saying that from there it is getting projected. Okay. So when you go away far also, okay. So because of this one, okay, you will not feel that regret. क्योंकि उधर मुझे वो लाइट से वो फील आना है, वरना मुझे क्या करना पड़ता है उधर? I have to keep one more area light because वो फ्लैट है ना, मेरा कोन है, right? I have to keep one more area light there. So what's happening there? I'm getting two lights. Two lights बोले तो मेरे ऊपर बटन है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एमिसिव एंड लाइट का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, so that एक का लोड नहीं गिरेगा एमिसिव का, लेकिन मेरा फील दोनों का आ जा रहा है. अगर मेरा मेन लाइट नहीं है तो कुछ दूर जाने के बाद व्हाट हैपेंस? इट विल लूज द effect. Understood? We will lose the effect completely. Got the difference? Where we have to use the emissive, wherever you use it, try to use one more light nearby if it is really. When you require two lights, instead of two, you can feel the, it means you can solve the work with the single light. Done? तो लेकिन लाइट स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो तो अलग से नोटिस होगा ना उसके अंदर, अगर दूर जाएंगे तो नहीं ना. आप जी लगा दिए तो नहीं होगा, unless until you add fog into it. तो फॉग के बाद सर इसमें यस हाँ, फॉग के बारे में आता. when you want such details you have to add two lights. सर इसमें इस वजह से लाइट नहीं दिखी क्योंकि वो उसके अंदर चली गई. किधर? स्पॉटलाइट डाला ऊपर.
नो ऑर्डर के अंदर करके इस वजह से वो दूसरे लाइट का नहीं लाइट के अंदर नहीं है वो, इट इज आउटसाइड ओनली. बिकॉज इट्स डायरेक्ट हाँ, इट इज इनसाइड ओनली, आउटसाइड ओनली. इट इज आउटसाइड ओनली, इट इज नॉट इनसाइड. आप जी दबा दिए तो सी, ये लाइट का मेरा मोटो क्या है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो विथ दिस, इसका मोटो क्या है? मुझे ये एरिया फिल करना. इसका मोटो क्या है? मुझे I have to fill up this particular area. If I increase my light, see which area it is lighting up. मेरा मोटो वो सॉल्व हो गया मुझे, राइट? मुझे इधर से लाइट दिखने की जरूरत ही नहीं है. इफ यू सी राइट नाउ देयर, इट इज फॉलिंग ऑन हिम, यू नीड नॉट टू सी दैट लाइट. वो लाइट का खाली उधर मुझे ऊपर का एम्बियंस दिखा तो बस है, which is solving my problem here, right? For example, here if I am there, नॉर्मल लाइट में तो लाइट सोर्स पता लगता है, इसमें स्पॉटलाइट पे नहीं पता. see right now, it is solving my problem. अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू गो, अगर मैं ऐसे अंदर लगाऊं फिर भी आपको कुछ चेंज नहीं रहेगा, बिकॉज दिस पर्टिकुलर ग्लेयर वॉट एवर इज कमिंग, राइट, इट इज बिकॉज ऑफ दैट एमिसिव. ये लाइट का इफेक्ट किधर हो रहा है? यू कैन सी इट हियर राइट नाउ. इफ आई जस्ट चेंज द सेटिंग्स, किधर हो रहा है? वेयर इट इज हैपनिंग? सी द फ्लोर, see the floor. Are you able to understand where it is happening? अगर इसको मुझे शार्प बनाना है, इनर कोन या वन सेकंड, सी अब इनर कोन को और आउटर कोन को मैं इफेक्ट कर रहा हूं. इफ आई वांट टू मेक इट शार्पर, सी राइट नाउ इट इज शार्पर राइट नाउ, बट दिस पर्टिकुलर लाइट के लिए ये सेट नहीं होता. ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग आई वांट दिस ब्लर इफेक्ट, वो कंपल्सरी ऐसे ब्लर होना, फेड ऑफ होना मुझे, then only it will be effective. Yeah, you are asking. तो अगर रूम के अंदर इन फोग डाल देंगे, हाँ तो वो एक पाथ बना देगा लाइट का. हाँ, उसको हम लोग गॉड रेज बोलते हैं. जैसे गॉड रेज. बताता हूँ. ओके, आई टेल यू दैट. ओके, जैसे अभी आपने लाइट का दिखाया था मेरे, अगर आप जैसे नीचे में लाइट लगाएंगे तो फ्लोर में, हाँ, ये भी वैसे हो सकते हैं. अगर ये ग्लो वाला, हाँ हो सकता है. अगर आपको मैंने ओके फल कौन सा वाला? वो जो एलईडीज लगी हुई साइड पे लाइट में, हाँ ये वाला, हाँ वो तो वही है, एमिसिव है. दिस इज नथिंग बट एमिसिव. ओके, नाउ these are nothing but emissive. This is not the light, this is from the emissive only. ओके, जो मटेरियल मैंने व्हाइट का बनाया था ना, वही है सेम, राइट? सो नाउ if I go to my see, so adding the lights. Okay, now what I am adding right now, PPV. ओके, मैं इस सीन को इधर तक है ना, इसको मैं अभी PPV ऐड करके दिखाता हूँ. व्हाट विल एग्जैक्टली हैपन. ओके, अब तक मेरा लाइट ओके, इट इज हैपनिंग लाइक दिस एंड एवरीथिंग, गॉट इट. नाउ व्हाट आई डू, आई जस्ट ऐड वन. ओके, पोस्ट प्रोडक्शन का जो है उसको लेके आके डालो. ओके, मैंने ओके सॉरी, आई थिंक इसमें पोस्ट प्रोडक्शन होगा. यस, वी हैव ऑलरेडी पोस्ट प्रोडक्शन वॉल्यूम, इट इज देयर. ओके, राइट. सो पोस्ट प्रोडक्शन में आप जब जाओगे, पहला यूज क्या था? वो बॉक्स के अंदर एरिया इफेक्ट होता है, नहीं तो बाहर एरिया इफेक्ट होता है. उसके लिए अनबॉन्ड. ओके, राइट नाउ इट इज समथिंग लाइक इंफिनिटी. अगर ये एनेबल नहीं है, सो फॉर एग्जाम्पल नाउ आउटसाइड से एक दिखता है, अंदर जाने के बाद और एक दिखता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई जस्ट स्विचिंग ऑफ, सी नाउ इट इज समथिंग लाइक डिफरेंट. व्हेन आई गो इनसाइड इट इज डिफरेंट. कैन यू सी? बिकॉज मेरा इसका इफेक्ट जो है उसमें चेंजेस है. ये पीपीवी में इफेक्ट्स
चेंजेस है। तो फिलहाल के लिए मुझे अनबोर्न कर रहा हूं ताकि पूरा एरिया हो जाए, राइट? wherever I am there, right now it will be affected. It is infinite. Right now it is infinite. Understood? Infinite बोलते there is no end for it. Okay? और नींद आ रहा है? सर मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर क्या था कि उसने जो जैसे रूम है तो उसमें टेबल है, तो जो बॉर्डर्स होते हैं खाली वो लाइट अप हो रहे हैं, इससे खाली बॉर्डर्स दिख रहे हैं इसके अंदर। तो वैसा कुछ भी हो सकता है पॉसिबल वॉल्यूम के अंदर, किससे? पॉसिबल वॉल्यूम के अंदर सर खाली कुछ सेटिंग्स होती है उसको ऑन करने से, जैसे मेरा स्क्रीन है हाँ, तो इसको खाली ये चीज लाइट अप हो जाएगी इसमें। नहीं, तो वो गेम में से बना रखा था। PPV से नहीं, that will be something like a coding inside. Compulsory. PPV से नहीं हो सकता. That is not going with the PPV. Okay? That is one. Next one is exposure. मेरा post volume select करता हूँ. I'll select the exposure, right? Exposure को मैं ऑफ कर दिया, देखो. तो एक्सपोजर में कभी भी मैं मैनुअल में लेता हूं, ठीक है? मैनुअल में लेके फिजिकल अप्लाई करके इसको ऑफ कर दिया तो मेरा साइन लिट हो गया, ठीक है? अंडरस्टूड? व्हाई आई हैव डन दिस? ठीक है, मैंने कर दिया मैंने, लेकिन क्यों करा? इससे पहले क्या प्रॉब्लम हो रहा था? एक्सपोजर जो है उसके ऊपर मुझे कंट्रोल नहीं है। ओके, मुझे ओवरऑल अभी एक सीन है, सीन में मैं शायद 100 लाइट लगा सकता हूँ। ओके, 100 ऑफ लाइट्स आर देयर एंड उस सीन को पूरा मुझे थोड़ा डल बनाना है, थोड़ा कंट्रोल करना है। तो मुझे क्या करना पड़ता है? आई हैव टू एडिट ऑल द लाइट्स। उतना तो नहीं कर सकता हूं मैं, तो इसीलिए लाइट लगाना हमारा जिम्मेदारी है, बाकी में उस सबको एक ही से कंट्रोल करना भी हमारा ये हो गया। दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। हियर वर्क ऑप्टिमाइजेशन कितना हो गया? राइट नाउ आई कैन सी हार्डली 3 or 4 लाइट्स, पर इन द सेम सीन इफ यू हैव 50 लाइट्स, 60 लाइट्स, 100 लाइट्स, 200 लाइट्स, सबको कंट्रोल करना है। सबको कंट्रोल करने के लिए नाउ यू आर मेकिंग इट वैल्यूबल। व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ? मोड का ऑटो एक्सपोजर से लेके, आई थिंक हिस्टोग्राम बोले तो सबको पता है। किधर देखोगे आप? वेयर यू विल सी दिस हिस्टोग्राम? हाँ, फोटोशॉप कैमरास में रहता है। दैट इज अ कर्व, राइट? ब्राइटनेस एंड इसका जो कर्व, जिधर डार्क आता है, जिधर ब्राइटनेस आता है। एम आई राइट और रॉन्ग? पता है ना? डिजिटल कैमरा जब आप DSLR यूज करते हो, देयर यू कैन सी दैट। ओके, सो वो क्या हो गया? वो ऑटो हो गया, उसको मैं मैनुअल बना दिया, ठीक है? मैनुअल बनाने के बाद अप्लाई फिजिकल कैमरा एक्सपोजर। कैमरा को भी मैंने क्या बोला था? यू विल हैव द एक्सपोजर। इससे पहले कौन पूछे थे? आई सेड लाइक कैमरा को अलग से एक्सपोजर रहता है, राइट? नाउ अगर मैं कैमरा का एक्सपोजर भी ऑन कर दिया तो क्या हो गया? मुझे डबल कंट्रोल हो गया फिर से। सो इवन दैट वन आई वांट टू कंट्रोल मैन्युअली। सो ये अप्लाई फिजिकल कैमरा एक्सपोजर जो है उसको ऑफ कर दिया। नाउ आई एनेबल दिस माय एक्सपोजर कंपोजिशन। इससे मैं कंट्रोल कर सकता हूं, ब्राइट कर सकता हूं, नहीं तो कम कर सकता हूं। पूरे सीन में जितने भी लाइट्स है आपको एक ही बार में कंट्रोल हो जाते हैं। अंडरस्टूड? Why we are keeping PPV the more important is not just so that अगर मैं उसके अंदर गया तो एक एनवायरमेंट, बाहर आया तो एक एनवायरमेंट, नहीं, मेरे सीन को पूरा कंट्रोल करना है। लाइटिंग इज द वन विच इज द मेन इंपॉर्टेंट, राइट? विच विल लीड। सो दिस PPV इज मेकिंग योर वर्क लिटरली टू द 10%। जब बड़े बड़े सीन्स करते हो आप, ओके, बड़े बड़े एनवायरमेंट्स करते हो, this PPV as a small thing, it will do the miracle. Understood? Try to get control on this. Okay? इसी में ही हमको आपको even you will have this one. Okay? If I just go for okay, ये देखो इसमें क्या क्या है? मुझे लेंस फ्लेयर भी है। Okay? Even if I want to control, but we will not control right now in this.
विल कंट्रोल डायरेक्टली ऑन द डायरेक्शन लाइट, ठीक है। लेकिन अगर मुझे व्हाट इज दिस लेंस फ्लेयर बोलते क्या है? तो जो लाइट कैमरा से रिफ्लेक्ट होती है, जब वो सन से जब हमको लाइटिंग से जब वो राउंड राउंड एंड दैट पर्टिकुलर स्क्वायर्स एंड क्यूबिकल्स में जब हमको दिखता है, राइट, इट इज ए काइंड ऑफ ए फ्लेयर, ओके, उसका एक रेस के जैसे दिखते हैं, उसको हमारा सीजी वर्ल्ड में टेक्निकल नाम है गॉड रेस। व्हाट विल कॉल देम? गॉड रेस। अगर आप गूगल पे जाके ओके जस्ट इफ यू प्रेस गॉड रेस, ओके, सिंपली क्या आ गया? सो टेक्निकल नाम कभी भी याद रख लो, व्हाट इज दैट? गॉड रेस, ओके। अभी मैंने पहले जैसे बताया कि वो राउंड राउंड रहता है, वैसे रहता है, कभी भी वैसे बात मत करो, ओके। व्हाट विल कॉल दैट? Never, when you're talking to any professional, okay, B words you have to remember, okay, just you have to say like lens flare or you can say like a god rays, understood? Yeah, मैं ऐसे मजाक में बोला था, वैसे गोल गोल रहता है बोल के, I thought like okay, done? Yeah, okay, now okay, volume fog बोल के रहता है, it means when we work on this, right? Okay. Sorry. लाइट है और हम लोग एक्सपोजर को फॉग हटा दिए। अगर आपको ये फॉग का इट मींस जो गॉड रेस है उसके ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल रहना है तो ये फॉग डेंसिटी यू कैन वर्क ऑन दैट, ओके। दिस यू जस्ट रिमेंबर, ओके, राइट नाउ वी डोंट हैव दैट सीन बिकॉज वो गॉड रेस सन के इसमें से आना चाहिए, देन इट विल बी डन व्हेन वी डू दैट, ओके, इन दिस क्लास ओनली आई विल शो यू दैट, ओके। इन दिस वॉल्यूमेट्रिक फॉग जो है, ओके, इसको एनेबल कर सकते हो, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सो दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक फॉग इज वन मोर रीजन टू गेट द फॉग। जो हमें गॉड रेस के अंदर फॉग जो आता है ना, ओके, उसको कंट्रोल करने के लिए। नाउ आई विल ओपन वन मोर सीन, ओके, राइट नाउ लेट मी फिनिश ऑफ दिस टॉपिक्स, एनीथिंग इज देयर, ओके। दिस फोर्स नो प्री कंप्यूटिंग मैंने बता दिया स्टार्टिंग में, राइट? पूरा लाइट जितने भी बेक्ड है उसको सबको ऑफ करने का, राइट? Yeah. Now I will go with another scene. Okay. बस और 3-4 ये ऑलरेडी बोल दिया ना मैंने. So this is something like channels I have already told. Okay. Channels के बारे में मैंने बोल दिया. So कौन सा वाला? चैनल्स के बारे में, हाँ, ये हो जाने दीजिए. नहीं, you can ask because in the meantime I will open a scene. Yeah, you can ask. Okay. हाँ. सर जैसे इसमें एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वजह से आपने वो 3 लाइट्स चूज करके वो डाल दिए कि इस पे है, इस पे है. अब इफ वी वांट कि ये जो लाइट्स है वो काइंड ऑफ मिक्स हो जाए, आप कह सकते हो कि एक डिफरेंट हो, है ना? जैसे लाइट्स है, हाँ. आपने ये अलग अलग अभी
परमानेंट आती है, ये इधर से इधर नहीं होगा, ये लाइट इधर नहीं होगा। हाँ तो ये वाला लिंक करनी हो, ये ऑब्जेक्ट में मतलब एक पर्टिकुलर साइड पे ना हो, तो हर एक साइड वो तो वही तो हो रहा है ना. 1 second. If I open a new scene, okay, for example, new level, I'm just opening it. Okay, I'm deleting all the lights. So I've taken 3 lights. One, थोड़ा इसका मैंने लाइट बढ़ा दिया, मैंने डुप्लीकेट कर लिया, 3 लाइट डुप्लीकेट कर लिया. ओके, नाउ इसको मैंने रेड बना दिया, अब इसको मैंने ब्लू बना दिया. ओके, इसको मैंने ओके ग्रीन बना दिया. राइट, नाउ दिस पर्टिकुलर एक ग्रीन का भी ये तीनों मिक्स होना है. फॉर एग्जांपल इसका जो रेडियस है उसको मैं बढ़ा देता हूँ, ग्रीन का. रेड है उसका रेडियस मैंने बढ़ा दिया, ब्लू है उसका भी रेडियस बढ़ा दिया. नाउ इट इज समथिंग लाइक व्हेन यू गो हियर, इट्स ऑल 3 लाइट्स मिक्स्ड हियर. ऑब्जेक्ट है जो अपना रेक्टेंगल डाला है, ये बॉक्स क्यूब डाला था. राइट, जैसे इसके पर्टिकुलर साइड पे ही आ रहा है, ओके. तो ये नहीं हो सकता कि वो ये जो तीन आपने अभी यूज करके दिखाए लाइट को इस पर भी है. ऊपर भी आया. हाँ, ऊपर क्या हो रहा है, तीनों लाइट्स मल्टीप्लाई हो. When RGB multiplies completely, it will become white. तो अभी मुझे फॉर एग्जाम्पल वैसे करना है, then what I'll do, I'll decrease this completely. Okay, I'll decrease this completely. Now I'll decrease this also completely. Now what I'll do, okay, मेरे ख्याल से इसका ऑब्जेक्ट का जीरो ही है. ऐसे ही आ रहा है. ऑब्जेक्ट करना अच्छा, इसका इंटेंसिटी ज्यादा है. सबका मैंने 30. तो जो फोर्स वाला वो है वो बंद कहाँ पे करना, ऑन कहाँ पे करना होता है? क्या? तो जो फोर्स वाली जो ऑप्शन आती है हाँ, वो ऑन कहाँ से करना होता है? 1 second. कौन सी लाइट? लाइट में नहीं, वो आपका सीन में पूरा लाइट्स डिलीट कर दो. ओके, फिर वापस से बिल्ड करना है. हाँ, वर्ल्ड बिल्डिंग में जो, हाँ, वो पहले सीन स्टार्ट होने से पहले करना पड़ेगा उसको. तो ऑब्जेक्ट से डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफाइन करेगा. हाँ अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो हाँ, तो वो भी मतलब डिफरेंट तो होगी पर ऑब्जेक्ट स्क्वायर है या कोई स्क्वायर सर्कुलर हो, सेम वो तो मिक्स ऑलरेडी दिखा रहा हूँ. if you have taken this, okay, now it will be mixed only compulsory. हाँ, लाइट ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसको आप कंट्रोल नहीं करोगे. अगर आपको उसको कंट्रोल करना है इसको, now you have to go with a spotlight. The same thing you will do with a spotlight. अगर आप स्पॉटलाइट ले लोगे, स्पॉटलाइट को आपको एक प्रॉपर कंट्रोल में आ जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर मेरा ए वाला है सोर्स, सॉरी इनर वाला है, दोनों 44 पे बना दिया तो शार्प हो गया. राइट, अब इसको मैंने ब्लू बना दिया, नाउ इसको मैंने डुप्लीकेट कर लिया.
Now इसको आप रेड बना लो. अभी इसको आप ग्रीन बना लो. Now this is something like अभी तीनों एरिया इधर मिक्स हो रहे. See, you are getting multiple colors in this. So like this, whenever it is a mixing that particular area, light automatic mix हो जाता है. You can't control that because अगर गिरा तो ऑटोमेटिक लाइट क्या होता है, ब्लेंड हो जाता है. इट विल ब्लेंड. यू नीड नॉट टू वर्क सेपरेटली फॉर दैट. अंडरस्टूड. खाली लाइट का एक एरिया का दूसरे एरिया में इन्फ्लुएंस होना चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं. ओके. नाउ आई विल गो टू one more scene here. Need something like some trees रहना चाहिए. I think doubt on them. The coach की कहाँ पे हटानी है? Side में टाइम ये जो हाँ, आता हूँ. ये क्लास हो जाने के बाद आपके पास आके. Here. So I'm just deleting all the lights here. Okay, here. See what you're asking for, I think we can do it here right now. Now in this, I don't have lights, but मेरे ख्याल से इसका incandescence से glow से है शायद, फिर भी मैं इधर try कर सकता हूँ. और मैं फोर्स में गया, इसको सेलेक्ट करा. सो बी फोर्स बी कंप्यूटर लाइटिंग जो भी है उसको ऑफ कर देगा. ठीक है. करने के बाद इसके ऊपर ओनली आई जस्ट बिल्ड लाइट्स ओनली. सो ये पूरे अभी इंटेंसेंस ग्लो से है. नाउ सी इफ आई गो हियर इन द टॉप. ओके. यू कांट सी एनीथिंग इन अदर प्लेसेस. ये जो है पूरे के पूरे ग्लो के लिए है. सी इफ यू गो हियर देयर इज नथिंग लाइक. सो जितने भी उसमें लाइट्स बेक होके है पूरा निकाल दिया उसने. राइट. Now you just go here and simply build your environment light. ठीक है. See right now you have built the complete scene. Okay. Now you are like this in this. Control L if you press. Okay, you can get this light area. Right now the shadows is at your side means sun is exactly opposite to you. Right? Sun is exactly opposite to you. Now what you will do? Okay.
So what I have told here, you have to select the directional light and here light shaft bloom बोल के है. What is that? Direction light करके light raise. मैं वर्ल्ड सेटिंग्स में हूँ. Sorry. Okay. Now shaft bloom. See, the moment what I've done, nothing. See, just clicked. आ गया मुझे. क्या है वो? This one. Now उसका bloom का scale मैं increase कर सकता हूँ. Okay. And threshold बढ़ा सकता हूँ मैं. सर जो ब्लूम फॉग बना रहे हैं उसको लाइट से हाँ? जो फॉग बन रही है ब्लूम नहीं नहीं, ऑलरेडी फॉग है उसमें. वो रेज बना रहा है. रेज वो रेज बना रहा है. Okay. Now see here, this particular color also you can change. You can make it more dramatic, blue. Let's see. आप और थोड़ा उसको ड्रामेटिक बना सकते हो. ठीक है. इसको मैंने इससे पहले अभी फॉग में, वॉल्यूम फॉग में मैं फॉग डिस्ट्रीब्यूशन बोल के है ना, इससे पहले मैंने दिखाया था वॉल्यूम फॉग में. There if you go in that, if you do the variations, you can see lot of variations. इसमें सही गलत कुछ भी नहीं है. It depends upon how you want to make your scene look more beautiful. That's it. This is something like a cinematic. इसमें ये सही है, ये गलत बोल के कुछ भी नहीं है. आप यूज कर सकते हो, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा लगा सकते हो, कम लगा सकते हो. आपके लिए कौन सा अच्छा लगता है? Whatever which feels you better. Understood? This is one thing. Okay. See right now, if you go turn like this, nothing is there. Right now, the moment when you see the sun, it is there. This is happening because of that particular जो वॉल्यूम फॉग का मैंने एनेबल करा था ना, उसके लिए. अगर मैं ऑफ करके उसमें वैल्यू दे दिया बोले तो इवन फ्रॉम साइड इट विल बी सीन सेम. सो इसमें इट इज नॉट लाइक सेम. इट मींस इट यही सही है बोल के, ये फिक्स्ड वैल्यू बोल के कुछ भी नहीं है. For example, in your scene, if you want like, if a character is running like this, side से, तभी आपको दिखना बोल के है. Okay. But अगर आपको बोलते हो कि आपका कैरेक्टर जब आपको सन को देख रहा है, तभी मुझे रेस आना. So it depends upon you how you want to make your things. Right now, it is see, it is looking so beautiful. What if you want to permanently show this? हाँ? अगर इसको permanently दिखाना हो तो वॉल्यूम फॉग में जो ऑप्शंस एनेबल है ना वॉल्यूम फॉग का, वो पूरा ऑफ कर दो. उसमें जो डिस्टर्बेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, वो पूरा ऑफ कर दो. उसको मैं 0 बना दो. देन नथिंग विल बी देयर. सो whichever view is there, you can see that. Understood? Right. And okay, और एक जनरली अभी हमको वो प्रॉब्लम इधर नहीं आता है. आपको लाइटिंग में, अनरियल में अभी तक एक बग है लाइटिंग में. ये स्पेसिफिकली किधर आता है बोले तो व्हेन यू डू ए इंटीरियर. व्हेन यू डू ए इंटीरियर, जो लाइट लीकिंग बोल के बोला था ना मैं, वो और एक लेवल में भी आता है. सो दैट इज समथिंग लाइक व्हेन यू आर हियर, लाइटिंग इज इन दैट पर्टिकुलर कॉर्नर, बहुत ही दूर में है, तब मुझे लाइट लीकिंग का फ्लिकरिंग दिखता है. अगर कोई प्रोजेक्ट आप कितने भी अच्छे इट इज नॉट बीन 100% सॉल्व. दैट पर्टिकुलर बग इज देयर स्टिल नाउ आल्सो. ओके, वो 100% सॉल्व नहीं होता. अगर आप कभी भी एक्सटीरियर के लिए अमेजिंग है, नो वरीज एट ऑल. जब इंटीरियर में पूरा क्लोज्ड है and everything is something like interior, then this particular bug is there till now. वो जो लाइट लीकिंग का जो उधर राउंड्स बनाता है, सर्कल्स बनाता है, वो दैट इज स्टिल देयर. लेकिन अगर जब भी अगर आपको ऐसा कुछ आता है, then okay, that can be solved only in this one. आप जस्ट लूमेन बोल के टाइप करो. सॉरी, इसमें कर रहा हूँ.
Okay, we have taken a new scene, right? So पोस्ट लगाना ही पड़ेगा. इस पोस्ट वॉल्यूम को I go in this, or if I go for lumen, okay. इधर जाके so post is compulsory, okay. Without that you will not get it. Post में जाने के बाद इसमें आप we will enable this final gather FG, okay. So post compulsory है. Now in this, if you edit it, you will not face that particular problem right now, okay. These particular values you have to edit lumen ka. So then that particular kind of light leaking can be less, but it will be there. वो कभी भी जाता नहीं, okay. Right now these are the elements which are basics of complete all lighting and interior, okay. Interior and exterior का जो भी है पूरा lighting मैंने आपको बता दिया, right. Now you have to do something like experimental in this. If you got any bugs, then how to solve that we will see, okay. इसमें maximum आपको bugs आ सकते हैं, एक ही है, that is nothing but light leaking. जो भी अगर आप interior कर रहे हो, right.